Anushka Sharma. She was known for her innocent looks and her stalker was crazy about her. वो उनसे बहुत प्यार करते थे. He was so angry with her कि प्यारी सी innocent सी लड़की जिसको मैं प्यार करता हूँ ये एक गंदा सा bedroom scene कैसे कर सकती थी. He went to her home and 2-3 बार घंटी बजाई. So she just said, "Don't trouble me, go away." And he just shot her and she died. क्या स्टॉकिंग है हार्मलेस लव या फिर फैंस का प्यार ले सकता है फिल्म स्टार्स की जान? It is quite a scare and the stars really need to be aware. Summer का season है hot, but today on page 3, the Fashion Blast will tell you how to look super hot. शाहिद कपूर को रिसेंटली उनकी फैन वास्तविकता ने इतना परेशान कर दिया कि शाहिद को उनके अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट फाइल करनी पड़ी। वेटरन एक्टर राजकुमार की डॉटर वास्तविकता खुद को शाहिद की बहुत बड़ी फैन बताती थी और जहां शाहिद जाते वो अक्सर वहां पहुंच जाती थी। यहां तक कि वास्तविकता शाहिद के घर भी जा पहुंची। कभी कभी तो वो शाहिद की गाड़ी के सामने आकर उनका रास्ता भी रोक दिया करती थी। वो सबको ये भी बताती कि वो शाहिद की वाइफ हैं। शाहिद कपूर के समझाने के बावजूद भी जब वास्तविकता नहीं मानी तब शाहिद ने उनकी कंप्लेंट पुलिस में कर दी। शायद अब शाहिद को अपनी इस दीवानी फैन से थोड़ी राहत मिल जाए। फैन की जरूरत से ज्यादा प्यार ने कंगना रनौत को भी खास परेशानी दी है। ओवरसीज के उनके एक फैन ने पहले तो कंगना को नॉन स्टॉप SMS और फोन कॉल्स किए और फिर उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। अपने एडमायरर की इस हरकत ने कंगना को काफी अपसेट भी कर दिया। Few years ago, the very beautiful रेखा के एक अरेबियन फैन उन पर कुछ ऐसे हो गए थे फिदा कि उन्होंने रेखा को एक रोल्स रॉयस गिफ्ट कर दी थी। रेखा की अदाओं से वो कुछ ऐसे घायल हो गए थे कि वो रेखा से शादी तक करना चाहते थे। अपने फैन के इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट को रेखा ने एक्सेप्ट करने से कर दिया इनकार। And the fan failed to woo Rekha with such a high-end luxury car. कुछ फैंस भले ही अपने फेवरेट एक्टर्स को स्टॉक नहीं करते हैं, लेकिन उनकी हरकतें काफी अम्यूजिंग होती हैं। माधुरी दीक्षित के एक दीवाने ऐसे भी हैं जो उनकी बड़ी से पोस्टर के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और माधुरी के उसी पोस्टर पर केक फेंकते हुए अपनी एडमिरेबल स्टार के बर्थडे का जश्न मनाते हैं। सिंगर सोनू निगम की एक फैन उनकी फोटो के साथ इंटरनेट पर चैट करती थी और उनका ये मानना था कि सोनू उन्हें रिप्लाई भी करते थे, जो कि सिर्फ उनकी इमेजिनेशन थी। वैसे कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जो अपने क्रेजी फैंस का सपना पूरा भी कर देते हैं। एक्टर अनु कपूर की एक फैन ने जब उनके लिए अपने प्यार का किया इजहार तो अनु कपूर को नहीं हुआ कोई एतराज। In fact, he got married to his fan. However, the marriage was not for keeps और फैन और अनु कपूर के इस रिलेशनशिप का हो गया the end। वहीं कुछ फैंस हो जाते हैं इस मामले में और भी लकी। अगर हॉलीवुड की बात करें, it's very different from Bollywood, even in terms of fan following. बॉलीवुड में फैंस अपने स्टार्स को रिस्पेक्ट करते हैं और प्यार देते हैं, लेकिन हॉलीवुड में फैंस अक्सर वायलेंट हो जाते हैं और ऐसी ही वायलेंस की शिकार बनी रेबेका शॉफर, जिनको उनके ही स्टॉकर रॉबर्ट बार्डो ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। रिपोर्टेडली केटी होम्स एक टाइम में टॉम क्रूज की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी और आज वो अपने हॉट स्टार की वाइफ हैं। जेनिफर एनिस्टन was also Brad Pitt's one of the craziest fans और luckily उनकी भी शादी ब्रैड पिट से हो गई। भले ही the marriage didn't survive for long and later they separated. The very pretty सायरा बानो भी दिलीप साहब की दीवानी फैन हुआ करती थी और बाद में वो उनकी बेटर हाफ बन गई। And the marriage is still going strong. Desirable stars को तो लाखों करोड़ों लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ फैंस इस चाहत में अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और कुछ अपने जरूरत से ज्यादा क्रेजी फैंस की दीवानगी से इम्प्रेस नहीं बल्कि उनसे डर जाते हैं। क्या है ये सिर्फ स्टॉकर्स का फॉल्ट या फिर हमारे बॉलीवुड स्टार्स भी करते हैं ऐसे क्रेजी फैंस को एनकरेज इन सम और द अदर वे? Let's find out on Party Shorty with our very own page 3 and Bollywood expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hi Supreet. Today we have the fan story. Yes, very interesting and intriguing. Encourage कौन किसको कर रहा है? I don't think हमारे stars उनको इतना encourage करते हैं. This could probably be a psychological problem जहाँ पे ये जो stalkers होते हैं, not the fans but the stalkers,
दे कैन बी डेल्यूजनल, और ये समझ लेते हैं कि स्टार भी उनसे उतना ही प्यार करता है जितना वो एक स्टार से प्यार करते हैं. एंड यू नो व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट ऑल दिस, द होल स्टॉकिंग थिंग एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पे मैं सोनू निगम की एक जो फ़ैन है या स्टॉकर समझो, मैं उसकी खुद की एक पोस्ट की हुई लेटर पढ़ रही थी, विच वॉज सो लॉन्ग, it took me almost 2 hours to read it. And वो लड़की ने अपना नाम भी लिखा हुआ है, she's from Howrah, and she has posted her phone number, her cell phone number, everything on the internet. And she says कि जब मैं सोनू निगम को वो शो पर देखती थी और वो टीवी पर टैलेंट शो पर आते थे, तो जब भी मैं उनके सामने गाना गाती थी या मैं डांस करती थी तो उनके एक्सप्रेशंस मेरे लिए चेंज हो जाते थे. तो दैट मीन्स ही वाज कम्युनिकेटिंग विद मी, एंड दिस इज़ हाउ उन्होंने मुझे एनकरेज किया. एंड व्हेन शी रोट दिस ऑन द इंटरनेट, इट वाज बिकॉज सोनू निगम वाज प्लानिंग टू मूव टू द US, एंड शी सेज कि सोनू निगम ने मुझे धोखा दे दिया और वो अमेरिका जा रहे हैं, जबकि उन्होंने मेरे साथ प्यार का इजहार किया है, मुझे एनकरेज किया है. और आजकल जब मैं उनके एक्सप्रेशंस देखती हूँ वो बहुत गिल्टी लग रहे हैं और उनके एक्सप्रेशंस सेम नहीं हैं, तो मुझे पता है दैट ही इज़ गिल्टी एंड नाउ ही डजंट लव मी एनीमोर. फैन इमेजिनेशन एक वजह हो सकती है इस चीज़ की. Correct. What about the other reasons that are out there? See, the other thing is, जब हमारे पुराने स्टार्स होते थे, they were very low profile. वो कभी ऐसे हमें कहीं दिखते नहीं थे, you know, in a lot of restaurants या events पर. So आजकल जो हमारे stars हैं, they are in such big fancy cars कि everybody living in Mumbai knows today, or even outside Mumbai through the media or whatever, they just know that okay, you know, शाहिद कपूर के पास ये गाड़ी है, शाहरुख खान के पास ये गाड़ी है, you know, Anushka Sharma is probably in this car. So it's so easy to spot them अगर वो कहीं जाते हैं. So privacy का सवाल ही नहीं उठता है. So obviously they are more accessible, they are more visible. So stalking is going to become a bigger problem than it has been in the past. Well, stalking the Hollywood में भी देखा गया है. So what's the difference you think between our industry here and Hollywood? Supreet, this is a very, very interesting question that you just asked me. अगर हम Hollywood के stalkers को देखते हैं और अगर हम Bollywood के stalkers को देखते हैं, एक बहुत बड़ा difference है. जो हमारे stalkers हैं, जो हमारे stars को stalk करते हैं, एंड जो फैंस एकदम ऑब्सेसिव हो जाते हैं, दे ओनली बिलीव इन लविंग आवर स्टार्स. वो इमेजिन करते हैं कि वो उनसे शादी करने वाले हैं या उनसे प्यार करते हैं, दैट द स्टार बिलोंग्स टू देम, बट इन अ वेरी लविंग एंड admiring way. And that could be because यहाँ पे हमारे जो stars हैं उन्हें एकदम demigod की तरह project किया जाता है. So एक hero worship समझ लो, that is what is happening with the stalkers in their mind. अगर हम हॉलीवुड को देखते हैं तो वहाँ पर स्टॉकर्स अक्सर प्यार कम करते हैं, अटैक ज़्यादा करते हैं. Like we take the very famous case in Hollywood, of course it's very old, but Rebecca Schaeffer, you know, she was a very teeny bopper, innocent looking actress, and you know she was known for her innocent looks, and her stalker was crazy about her. वो उनसे बहुत प्यार करते थे. And then he realized that once in a movie she's gone and done a bedroom scene. He was so angry with her कि प्यारी सी innocent सी लड़की जिसको मैं प्यार करता हूँ, ये एक गंदा सा बेडरूम सीन कैसे कर सकती थी. So he took a picture of her, he drew a diagram of her body और उन्होंने मार्क किया पेंसिल्स के साथ कि वो कहाँ उसे जाके शूट करेंगे. He went to her home and 2-3 बार घंटी बजाई. So she just said, "Don't trouble me, go away." And he just shot her and she died. Exactly and, the same. You know, cases. and there have been other cases where people have been attacked violently. There was another actress जिनके stalker ने उन्हें इतनी बार stab किया था. Luckily she survived, but इतनी जोर से stab किया था कि the knife had bent. So there is this difference. और हमारे stars यहाँ पे अकेले नहीं होते हैं. They can afford more security. You know, it's not lonely in a place like Mumbai. It's always crowded. If you look at Hollywood, they perceive their stars as weak, as lonely, as, you know, being on drugs and living in probably places that are not very secure where they can get them. And it is difficult, so they are more vulnerable. Well, not all cases are violent. यहाँ पे जहाँ हम बोल रहे हैं कि stars भी encourage करते हैं to the point of marrying their fans. Yes, to a point that they actually marry their fans. So like I said, कि कई बार it also happens from the other side. But that's, I think, a sweet romantic story, right? कि एक fan अपने favorite star को मिली और उनकी शादी हो गई. And of course, here we have Dilip Kumar and Saira Banu. She was a great fan of his. America में भी in Hollywood, you have so many cases like this. Even Jennifer Aniston, जो आज खुद एक star है, but she was completely in love with Brad Pitt when she was younger, and she wanted to marry him, and she didn't know that she's going to become an actress or she's going to become famous. So essentially she fell in love with her star and she married him. It's the same thing with Katie Holmes and Tom Cruise. वो अपनी बहन के साथ एक movie देखने गई and she came out and she says, I'm going to marry this guy, and she did. तो अक्सर that also happens, but usually अमेरिका में प्यार कम होता है, violence ज़्यादा होता है. Even this example of Gianni Versace, who was a very famous Italian designer, and he was gay himself, very flamboyant.
And the guy who killed him outside his home was also a gay prostitute, and he was stalking him, and then he went and killed him brutally. Well, depressing yet intriguing, and that's just film industry anywhere you It's go. showbiz anywhere in the world. Well, let's talk about the hot shot of the week. Yes, so I caught up with Delhi-based designer Arpan Vohra, and मैंने सोचा आजकल summer है, we are feeling hot. Why shouldn't we look hot? So here is Arpan Vohra in our hot shot of the week, giving our sexy young viewers lots of tips on how to look hot and still be cool. And just because it's summer, that doesn't mean that you have to wear less clothes and look less glam. You can still wear sexy clothes and look very glam. And for that, we have with us designer Arpan Vohra, especially from Delhi, who's going to give our viewers some hot tips. So Arpan, what do you suggest to the young viewers of Zoom? What can they look like and what should they wear in the summer? Summer is all about being casual and free-flowing. You know, just kaftans are very in, the boho look is very in, to something which is like takes you back to the south of France kind of beach and all. So the kind of collection I'll be showing you is something keeping them and those places in mind. So chalo दिखाइए. This is a very smart kaftan which is again jeweled up है और इसमें 3 रंग मैंने डाले हैं. Break किया है, color blocking is there, and yet it's kind of looks big, but yes, it fits all. It's a free size, fits all sizes. Be it young or be it middle age, you'll look fab, and it's something which is very trendy. What should be they wearing with this? Simi, ये ड्रेस की तरह भी पहना जा सकता है. इसके अंदर लाइनिंग हम दे सकते हैं, या you can just wear it like a kaftan over a nice tube and you know just wear your shorts with it. और आप कहीं पे मोरक्को चले जाओ या कहीं पे आप साउथ ऑफ फ्रांस चले जाओ, this will be just trendy and it's easy. इसमें कोई वेट का भी प्रॉब्लम नहीं है. So basically it's a very fun garment. Even over a swimsuit. Yes, exactly, over a swimsuit, a nice bikini, you will rock. How about some other colors? This is very hot for this. Beautiful. It's very takes you again sea water. इसमें आपका blue है, green है, and then we have just played with the tassels around. So jewel up थोड़ा कर लिया, तो ये शाम के समय अगर आप कहीं पे हो vacation पे, perfect for the evening where you can sit down with your friends and enjoy your drink. Casual but very glam. But very glam at the same time. Wear your nice gold Indian Kolhapuri chappals and just have a nice clutch, and you're there for the night. Awesome. And what about some formal evening wear for the summer? Sure. For the formal evening wear, I've done something in terms of a nice tangerine kaftan, which this is again shoulder के ऊपर हमने इसको enhance किया है, थोड़ा सा color blocking किया है. You wear it with your cigarette pants or drain type pants white में, और इसी का एक और version जो है वो है ये वाला, जो बहुत अच्छा, और इस पे response भी बहुत अच्छा आया है. And I think if you see they can be worn like a dress, or you can team it up with your trousers. Indo-Western as well, right? For ladies who are not very comfortable just wearing. Exactly, that's the idea. Very nice. And how about the evening dresses there? इस तरीके के prints के साथ और halter के साथ, जिसमें थोड़ा सा jeweled up काम हुआ है, तो ये बहुत evening के लिए बहुत अच्छा लगता है. You can wear it for you know afternoon lunches also. So basically, I think the viewers have got the gist of it. अगर आप अर्पण के कपड़े नहीं ले सकते हैं, तो just go and get some embellishments or some neck accessories or beautiful necklaces and just stitch them on to a dress, and you're going to look as glam as the designer makes his clients look. Thank you very much for talking to Zoom. Thank you so much, and you have a great summer. You too. Gossip होती रहेगी और आपको फिल्म स्टार्स की खबरें मिलती रहेंगी, but only after this short break. Okay, party time then. You bet. What's the first one we're starting with? I think jewelry and diamonds, they're always a woman's best friend, and I love to go for anything that has to do with diamonds and jewelry. It's besides the point that I'm not wearing anything today. But Sunil and Kiran Datwani, very well-known you know, jeweler family of Mumbai, they were celebrating 26 years of being in the business, so let's take them to the place. From jewelry now to fashion. You bet. And Shantanu Nikhil, they showcased the new collection, and of course, we are going to show it to our viewers.
was another event as well. Yes, it's my friend Bhageshri, and you know, she herself is very beautiful. She's, you know, always had the cutest face. I think probably one of Salman Khan's prettiest heroines, Yes. right? So she's decided to venture into designing, and she launched her collection. And of course, you can see all the girls going crazy there. So let's share with the viewers. बहुत अजीब सा ट्रांजिशन देख रही हूँ मैं, शैंपेन से हम कॉफी पे जा रहे हैं. Well, because Abhijit, जो singer है, he takes great pride in the fact that he's a better businessman than being a part of showbiz. So here he is launching yet another business venture, and you want to see it? Of course. So let's Sip go. away. Any more surprises in store for us? Yes, Anushka Sharma happens to be the birthday girl. It's her birthday 1st of May. So we decided to meet up with Bhavik Sangvi, the numerologist, and find out what the year has in store for her. Let's hear him out. Hey Bhavik, welcome to page 3. My pleasure, Simi. भाविक, तो अभी हम बात कर रहे हैं अनुष्का, जो हमारी पावा बनी है पर्सन ऑफ द वीक, अनुष्का शर्मा. इट्स हर बर्थडे 1st of May. दिस इज वेयर शी स्टार्ट्स हर न्यू ईयर विद हर बर्थडे. तो अनुष्का शर्मा का ये साल कैसे रहेगा? See, Anushka is born on 1st of May 1988, which makes her number 1 person in numerology. उनकी sun sign है Taurus. तो Taurus, all Taurans are ruled by number 6. और सिमी, अगर मैं उनके डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल करता हूँ, तो that sums up to number 5. She is completing 24 and entering 25th year, which is number 7. And number 7 is also amongst her lucky numbers. I see a fantastic journey for like this year ahead. I mean, in terms of films, in terms of her personal life, in terms of health. एंड उनकी वैसे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्म्स नहीं ली हुई हैं ऑन हैंड राइट नाउ, सो बट शी डज हैव 2 रिलीजेस. सो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द फेट ऑफ द 2 मूवीज दैट वी आर एक्सपेक्टिंग इन सम टाइम? जहाँ तक उनकी नेक्स्ट फिल्म की जो रिलीज़ की बात है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली उनकी जो विशाल भारद्वाज वाली फिल्म है मातृ की बिजली का मंडोला, वो रिलीज़ होगी, वेयर शी इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ बिजली ऑफ कोर्स. एंड मुझे लगता है कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर वो फिल्म ज़्यादा कामयाब नहीं होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की जाएगी. और उनके बाद जो यश चोपड़ा जी अनटाइटल्ड फिल्म है, वो मुझे लगता है कि अनुष्का शर्मा के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. उस मूवी में शाहरुख हैं, कटरीना है, सो यू डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू आउटशाइन दिस पीपल? यू आर सेइंग दिस मूवी विल एक्चुअली हेल्प हर एंड शी विल बी बेटर? 2012 इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक ईयर फॉर अनुष्का. व्हेन इट कम्स टू हर पर्सनल लाइफ, आपने कहा कि उनकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी रहेगी. So do you see her getting involved with somebody? Because there has been a lot of confusion, and we don't know whether it was Ranveer Singh or Ranbir Kapoor or Shahid Kapoor for that matter. And she's going to do a movie with Ranbir Kapoor. So kahin pe koi proximity? Do you think she's going to be dating somebody special? Anything on the love front? I can see that over a period of the next 6 months, she might actually find someone who's like उनके लाइफ में जो stable relationship जिसको बोलते हैं, she might actually want to settle down early with somebody. I mean, but this is very confusing. You're saying that she's going to be ruling the roost, and she's going to be there in the top league for the next 5 years, and then you're saying that maybe, you know, she will settle down for. That's what her numbers का उनका जो combination है उतना अच्छा है, and I feel that she can balance both the worlds, which is so rare and which is so fantastic. Health wise मुझे लगता है कहीं ना कहीं she tends to overdo sometimes. She can get used to some vices and all that, especially throat problems and a little bit of liver problems in case if she's getting into drinking and all that. I wouldn't know, so I can't say anything. Yeah, तो वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो सकती है. Otherwise, she's got a fantastic future ahead. Well, that was wonderful hearing all this about Anushka Sharma. I hope she's watching this show, because this is a great birthday gift Zoom is giving her. And thank you very much for coming to the Zoom studios. Thank you so much, Sim. It's always a pleasure. Well, that was a lot we did this week. You bet. I'm breathless. A lot of conversations and parties, events. We've had it all. You bet. Thank you so much for joining us. We'll see you next week. Sure. Well, it's time to say goodbye for now. लेकिन चटपटी खबरों का मेला लगता रहेगा every week on page 3. Till then, you keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.